Is 1 second. Yes. So, hello and welcome everyone. This is Veda here, coming to you from Pune, and so very excited to start a new batch of Neutralite Live 360, our program. Today, we are going to have an overview session, and you are absolutely fortunate because before that, okay, I was just listening to a podcast today, and that recording was somewhere during near the New Year's time, and what I learned was usually in the earlier days when jab hum sab New Year resolutions rakhte hai, right? And it's good to have a resolution. At least you're aiming for something, right? But usually the New Year's resolutions used to be like, probably book my next flat or first flat or a car, and then probably quit smoking. And health kahin pe later hota tha. But in the last few years, the first few resolutions, most common resolutions would be to either lose weight, exercise daily, or probably participate in my first marathon. The health awareness has gone higher, but cross your hearts, friends, how much are we really doing? Even if the intentions are there, how much are we doing? How much are we able to do? Especially because of the fast paced life. And that's exactly why this program was curated, keeping in mind कि हमें कुछ simple चाहिए, कुछ doable चाहिए that can create habits. And that's where, we are so fortunate. You will be listening from two speakers today. There are two parts to this session. The first part, you will be listening from our mentor, our esteemed coach. And in the second part, you will, get to hear the overview of this program, post which, if there is time, we will open for question and answers. But let me first introduce to all of you our esteemed coach and mentor. I think we are absolutely fortunate that even though we had the backing of, yes, various scientists and nutritionists, having the right coach for your lifetime, for your health, is absolutely important, right? And we have none other than, a three-time Olympian, a double world champion in the sport of sailing. He has numerous awards to his credit, including and not limited to the Chhatrapati Shivaji Award, the Arjuna Award. Yes, this is Farooq sir, Farooq Tarapur, who is our esteemed coach and who selflessly is driving, helping us each reach our health goals. His motto and our motto is Har Ghar Tandurust, Har Ghar Medicine Free. No, not you getting free medicines, but free of medicines. So let's put our hands together for none other than Farooq Tarapur. Over to you, Farooq. Thank you, Veda, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session where we are starting a new batch, and we'll go through various health aspects which might be of great importance to you and your family and your friends. I hope you all had early dinner and you all have done your exercise. And even if you did not really go and do the exercise, I hope you at least did the exercise which I've just put onto the group about how to improve your blood circulation. Don't take that exercise lightly just because it's extremely easy to do. It's a very effective exercise because the minute your blood circulation in your body is good, automatically your holistic health, gets taken care of. A lot of problems, a lot of cardiac issues, a lot of neuropathy problems, a lot of nutritional problems start with lack of blood circulation. And this simple exercise, which will take you less than a minute to do, okay, if you did it about 10 times a day, it's just investing about
10 minutes of your time in the whole day, you will find that there will be a tremendous benefit. So just because something is easy to do, don't, neglect it. Just because it's simple to do, it doesn't mean that you will do it. Simple things are easy to do, but they're also easy not to do. So I really urge you to take that exercise very seriously. I just met somebody, who was pretty old, about 85 years old. And he said that, hey, I can't do this exercise because I just can't seem to coordinate my feet. And my simple advice is that if you cannot do it standing, at least do that same exercise while sleeping. And it will have a tremendous effect. The edema will go, your skin will look good, you will look good, you will feel happy, you'll feel energetic, and you'll basically feel good with yourself. So I really urge you to do that exercise, have a look at it. And the reason why I'm repeating this again and again is because I strongly believe that repetition is the mother of all teaching. And only when things are repeated over and over again, some part of it goes in. I don't have a problem repeating it because I know that the first time when I said it, nobody is listening, but that doesn't matter. Okay, as long as you do it at some point of time. Make a nice little habit out of it, form a good habit that every time you drink water, you do it, every time you go to the washroom, you do it, every time you have a meal, you do it. And automatically 10 times in a day will get covered. So today you're going to listen from Raj, okay, who has really made a huge transformation in his health and is changing the health of lots of people around him. He was somebody, who was working, in the corporate sector. And for him, at that time, health was like the last thing on his mind. They even the word health was not even in the vocabulary. And over a period of time, he realized that how it was, basically impacting his health. And he took a good decision to change his health. And today he's not only changed his health, but he is making an impact on hundreds of people around him. So listen to him very carefully. He's going to throw some facts and figures at you, and they may be scary, but they are the truth. They are the reality. So understand where we are headed, understand what technology is doing today, what are the good things about technology, what are the bad things about technology, and make a strong decision to change not only your life, your health, but the health of your friends and family. And let's, create a community which is like really, talking healthy, living healthy, breathing healthy. One of the easiest ways I found that you can stick to a health program is that if you do this health program with a buddy. So I encourage everybody on this platform that get somebody along with you. And when you do this, when you embark on a health journey with another buddy, your probability of success will increase by 50%. You do it in a community along with the buddy, it increases by 75%. So keep on introducing this concept to other people, keep on introducing the concept of, staying away from medicine, because each medicine has got its side effects. It's not that, that you must not take medicine. It is that you got to understand what is the price that you're going to pay for medicine. And if there are other options available to you, better to adopt those options than to just, like if you get a headache, the general tendency is to take a painkiller. Now, there are several ways, natural ways by which you can get your headache off. So let's adopt those healthy practices and make a healthy community around us. So listen to Raj, because Raj is going to show some really good numbers to you today. And it is not to scare you, but it is to bring reality to you. So thank you for listening, and over to Raj. Thank you, Farooq. Thanks. One second. Whether is it visible? Yeah, it's visible. Yeah. Thank you. So, why health? Why now?
three things that you can expect from today's session is, number one, why health and what is the priority, like why now? Second thing that you can expect from that, what you're going to get from today's program is why this program only. And the third and the most important thing is what you'll get tonight is what you can expect for yourself. So ये तीन चीज जो आज आप यहाँ पे देखने वाले हो कि why health, why now, एंड यही प्रोग्राम क्यों, एंड थर्डली आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इस प्रोग्राम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो लेट्स सी व्हाई हेल्थ, व्हाई नाउ. एंड इसके पहले कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज हेल्दी लाइफस्टाइल ऑल अबाउट. नाउ earlier I used to think that if you are not sick, that means you are healthy. So just absence of sickness is what I thought is healthy is all about. But healthy lifestyle focuses on incorporating 8 aspects of well-being into one's life: emotional, environmental, financial, intellectual, occupational, physical, social and spiritual. Now अगर आप आज के एनवायरनमेंट में देखिए, जो सबसे ज्यादा आज की तारीख में हम फोकस कर रहे हैं is to make money. I mean, we compromise on a lot of other aspects of our life, be it health, time, or other aspects. And हम सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करें, that is the financial stability. But healthy lifestyle is about creating a balance of all these 8 things put together, right? Now, let's see some of the facts जो फरूक अभी मेंशन कर रहे थे कि आज की रियलिटी क्या है. Now, आप कहीं भी चले जाओ आज, like be it a mall or office or anywhere. Now, if you see, we are not very healthy. But that doesn't mean we are sick. But अगर आप इसको देखोगे कि which direction are we headed towards? I mean, आज आप कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन उठा के देख लीजिए, एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को जो लॉन्च करने का जो सबसे बड़ा बेंचमार्क है कि इस एरिया में हॉस्पिटल कितने हैं. आई मीन, अगर आज आप हॉस्पिटल के स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, तो प्रॉब्ली द प्लेस वेयर यू आर लिविंग इन द लास्ट 5 years, इफ यू सी द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स दैट हैव नाउ कम अप. But what does it tell you? It tells you about the statistics. So the owners of the hospital, they understand this number कि hospital की requirement कैसे तेजी से बढ़ने वाली है. So now that is all about the sickness. So these are some of the facts. Like, let's understand what is the facts. Like, where do we stand today? So 8 out of 10 Indians are deficient in protein. 9 out of 10 Indians are unaware of the daily requirement of protein. Now, लेट मी टेल यू, ये अर्बन और रूरल पॉपुलेशन दोनों को कवर करता है. सो इमेजिन करिए कि अगर एजुकेटेड और लाइक अर्बन एंड रूरल दोनों को मिला के अगर ये स्टैट्स है, तो ये स्टैट्स कितने स्केरी है. नेक्स्ट, स्टडी सेज दैट 7 out of 10 Indians डोंट मीट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अ डाइटरी फाइबर्स. 8 out of 10 Indians suffer from micronutrient deficiency. As per the reports, micronutrient intakes of 70% Indian population are less than 50% of the recommended daily allowance, right? Now, did you know that 3 out of 4 Indians suffer from vitamin D deficiency, which means almost 75% of the population? Almost 1 out of 2 Indians are calcium deficient. ये कुछ इंडिया के ज्योग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स है. आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स, लेकिन एक चीज जो आप इस इमेज से क्लियरली देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स अगर आप देखें तो मतलब हम बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है. ये जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस द रीजन, अगर आप इसको देखोगे तो. नाउ, लेकिन इसका रूट कॉज क्या है, ये शुरू क्यों हुआ, ये क्यों है, मतलब ऐसे अगर आप देखिए, समथिंग अराउंड 40,000 years ago, आर फिजिकल एक्टिविटी जो हम पूरे दिन में करते थे, दैट यूज्ड टू बी अराउंड 10 to 12 hours per day. Something around 10,000 years ago, our physical activity was still around 10 to 12 years. 125 years ago, that's the industrial age that we were in. Our physical activity used to be around 8 to 10 hours every day. But today, in the information and technology age, आज की जो सिटिंग जॉब्स है, अगर आप इसमें देखिए जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है इन द लास्ट 20 years, दैट हैज कम डाउन टू एज लो एज 25 minutes per day. नाउ, अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटी में इतनी सिग्निफिकेंट ड्रॉप होगी, फरूक अभी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो इमेजिन करिए इसका जो इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ पे वो कितना सीवियर पड़ने वाला है. नाउ, सेडेंटरी इज अ डिजीज. Earlier, when I was in the corporate world, sometimes, like not sometimes, most of the times जब मैं अपनी physical activity calculate करता था, that used to be hardly like 600 700 meters per day. So home door to car door to office door से again car door से home door. Now that used to be my lifestyle. Now imagine उसका impact क्या पड़ता है आपके health पे. Now the physical inactivity effect 1 out of 4 of people worldwide.
Sedentary lifestyle is called a disease of the 21st century. It is a risk factor for various metabolic disorders like cardiovascular diseases, elevated blood pressure, type 2 diabetes. Last night we were invited for a dinner at a friend's place और वहाँ दो छोटे छोटे बच्चे थे और जैसे बच्चे कुछ करने की कोशिश करते पेरेंट्स उसको मोबाइल देके बैठा दे रहे थे एंड लाइक आई वाज वंडरिंग कि लाइक अगर बच्चा खेलना चाहता है उछल कूद करना चाहता है उसके करने दो जब भी वो बच्चे कुछ करने की कोशिश करते पेरेंट्स उसको मोबाइल देके बैठा दे रहे थे नाउ इमेजिन अगर आप एक 5 इयर्स 6 इयर्स बच्चे पे अभी से वो पैटर्न डेवलप करोगे इमेजिन कल के दिन में 20-30 साल बाद उसके हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट करने वाली है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट सेडेंटरी इज अ डिजीज नाउ पुअर फूड हैबिट्स यू नो आई मीन be it anywhere any economic background of the India or in our society अगर आप देखिए अभी भी ये डिबेट होता है कि is brown bread good or white bread good the answer is neither of them is good you know so the second most important factor which is impacting our health is the food choices that we make day in day out and the best part about this community is जब आप इस community का हिस्सा बनते हो इस WhatsApp group का हिस्सा बनते हो हमारे जो experts हैं at least you learn how to make the right food choices you know sometimes it so happens we don't know what we don't know and because we don't know what we don't know it leads us to some bad choices and what you're going to learn over here your so many questions जो अभी आपके दिमाग में भी नहीं आए हैं वो भी शायद यहाँ पे आंसर हो जाएंगे जब आप देखोगे तो now excessive screen time यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट टू हियर दिस पहले मेरी भी ये हैबिट हुआ करती थी कि अगर मैं आधी रात को भी अगर मेरी नींद खुल गई तो मैं उठ के अपने मेल्स मोबाइल में चेक करने लगता था इट सो बिकम्स योर हैबिट एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड इट स्टार्टेड इंपैक्टिंग योर स्लीप पैटर्न्स एंड ऑल दो स्टफ सो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यू नो हर घर में मतलब most of the houses if you see there is a TV in the bedroom and before going to the sleep we feel that it is our moral responsibility थोड़ा देर टीवी देख के हमें अपने आप को अनवाइंड करना चाहिए लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो हम अनवाइंड करने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो हमें जो सोने लाइक जो स्लीप की जो प्रिपरेशन करनी है या जो हमें स्लीप आना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारा बहुत सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट होता है इंडिया रेस्टलेस 3 out of 4 Indians don't get quality good night sleep and ये post covid ये impact बहुत ज्यादा बढ़ गया because of the screen time and all those stuff somewhere it has started impacting our health very significantly you know very significantly so sleep earlier it used to be only the food and your physical activity that was causing the major impact on our health today sleep has become the most important factor which is causing a lot of health related challenges in a human body 4 out of 10 Indians are obese, you know, लेकिन अगर आप it is not about 4 out of 10, but अगर आप इस statistics को देखेंगे तो धीरे धीरे statistics बढ़ते जा रहा है आप अपने ऑफिस में देखिए अपने इर्द गिर्द देखिए you know you'll find that like suddenly you'll find that people like slightly like they are gaining weight and all those stuff. Over 19 crore adults aged between 30 and 79 years suffer from hypertension. This is W Health Organization's report 2023. Now, you know, these facts are not about to scare you, but this is the reality. Now, कई बार हम क्या सोचते हैं हमें ऐसा लगता है कि जब भी कोई बैड न्यूज़ आती है मेरे पड़ोसी को आ जाएगा मेरे ऊपर वाले घर को आ जाएगा नीचे वाले घर को आएगा हमारे को नहीं आएगा बट अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट डेलिब्रेट अबाउट इट and just आप सिर्फ यही सोचोगे wish cannot be a good strategy you know so you need to be deliberate about this thing that how what Veda was saying that जो हमारे health span और life span होनी चाहिए that should go in hand right हर घर तंदुरुस्त हर घर medicine free. So 6 out of 10 Indians have abnormal levels of bad cholesterol again because we don't have any choices about the good cholesterol that we make. So by default we fall in this trap where we our bad cholesterol increases over a period of time. You know, 3 out of 10 deaths are happening by cardiovascular diseases. So कहीं ना कहीं हमें ये सब कुछ पता है लेकिन you know the reason of bringing this today is so that we understand that where do we stand today and where are we headed and if we don't make the right choices we are definitely headed in a wrong direction. Now this is like the diabetes statistics in India आपको ये पूछने की भी जरूरत नहीं है majority में if you are above the age of 40 years of age most of the places it is found that either the person is diabetic or is pre-diabetic you know and
कहीं ना कहीं हम उस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं लोगों को, लाइक वॉट एवर वी इंटरेक्ट और वी एसोसिएट विद द पीपल, वी फाइंड वो भी बीमार है, हम भी बीमार है, तो चलो ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, यू नो। सो वो भी बीमार, हम भी बीमार, सब ठीक है, मतलब वी आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। But in this particular thing, it is not a good idea to be a part of that majority, because it's only the minority who is taking that decision, that they want to be fit and they don't want to rely on any of the medicine or pills. 10 crore people in India, 11.4% of the country's population are living with diabetes, you know. Now, अगर आप इसको देखिए, so this is not the important thing. The important thing is ये year on year कैसे grow करते जा रहा है. So if you don't take a deliberate step today, by default, you know, sometimes it's like अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो और अगर आप वहीं खड़े हो जहां पे आप खड़े हो, तो आप वहां नहीं खड़े हो, एक तरीके से आप पीछे जा रहे हो. This is exactly what happens over here. Is if you are not deliberate about your health, if you are not deliberate focused about your health and आपका लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, so by default ये जो जोन है, इस जोन में तो हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे. So 50 to 60% people progresses from pre-diabetic to diabetic. Like that's the ratio जो pre-diabetic से diabetic की तरफ जा रहे हैं. Non-communicable disease is at its all-time high. Now, what do you mean by non-communicable disease? ये वो disease है जो हमारे लाइफस्टाइल के वजह से हो रहा है. एंड अगर आज की तारीख में अगर आप देखिए, सो कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो बहुत कम रह गया है, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. एंड यू नो, नॉट सो गुड पार्ट अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज, अगर ये किसी को हो जाए, सो इन अ वे देयर इज नो क्योर टू इट. आपको जिंदगी भर वो मेडिसिन लेते रहना पड़ेगा जस्ट टू सप्रेस द सिम्टम, बट आप क्योर नहीं होते हो. सो आई मीन, डजंट इट गिव, एक वो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर मेडिकल साइंस इतना ज्यादा एडवांस कर चुका है, तो क्यों हम फिर डायबिटीज से हमारा परमानेंट क्योर नहीं हो जाता, या थायराइड से हमारा परमानेंट क्योर नहीं हो जाता, ब्लड प्रेशर से हमारा परमानेंट क्योर क्यों नहीं हो जाता, क्यों हमें बार बार वो मेडिसिन खाते रहना पड़ता है, सो दैट वी कैन कीप द पैरामीटर्स अंडर कंट्रोल. एंड दिस इज वाई द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को लाइफस्टाइल डिजीज भी बोली जाती है. और क्योंकि ये ओरिजिनेट आपकी लाइफस्टाइल के वजह से हो रहा है, इसलिए इसका जो आंसर है वो मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन मीन्स वो पिल के अंदर नहीं है, बिकॉज ये आपकी चॉइसेस के वजह से हो रहा है, और जब तक आप अपने चॉइसेस को करेक्ट नहीं करेंगे, ये नहीं जाता. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इज इट रिवर्सेबल? द आंसर इज, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो रिवर्स नहीं की जा सकती, सिर्फ हमारा माइंडसेट है जिसको ठीक करने की जरूरत है. राइट? Now, 2 out of 10 people suffer from osteoporosis, 5 out of 10 people from osteopenia. That's the bone का, हमारे bone का जो level है. Now, how cautious are we about our bone health? सोच के देखिए, क्या हम इसको importance देते हैं? लेकिन अगर अभी नहीं देते हैं, तो आगे चल के, and you know, it doesn't lead to only to bones. It will have other side effects connected to your other vital organs. 2 out of 10 Indian suffer from suboptimal immunity. इम्यूनिटी लेवल वीक है. थोड़ा सा मौसम बदला नहीं कि सब एंटीबायोटिक डोसेज पे एंटीबायोटिक कोर्स करने लगते हैं. एंड द नेगेटिव पार्ट अबाउट द एंटीबायोटिक इज, बाय द टाइम यू विल हिट द एज, लाइक एक सीनियर एज में जब आप जाओगे, आप रियलाइज करोगे कि आपकी बॉडी किसी भी एंटीबायोटिक आपकी बॉडी पे असर ही नहीं कर रहा. नाउ दैट्स द अनदर साइड इफेक्ट. अभी रिसेंटली आई विजिटेड अ हॉस्पिटल टू सी वन ऑफ द पेशेंट ओवर देयर, एंड ऑलमोस्ट कोई भी एंटीबायोटिक उनको असर ही नहीं कर रहा था, और डॉक्टर बोल रहा था वो मैं, मतलब इतना सारा चीज दिया गया. सो इवन यू नो, हर छोटी चीज पे एक एंटीबायोटिक कोर्स कर लेना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज आपकी बॉडी इतनी इम्यून हो जाती है कि फाइनली बॉडी का जो अपना जो इम्यूनिटी लेवल पावर है वो सप्रेस रह जाता है. सो ये वो बहुत बड़ा रीजन है कि आप बच्चों को देखिए, थोड़ा सा मौसम बदला नहीं कि एक दिन धूप बारिश हो गया एंड पीपल स्टार्ट फॉलिंग सिक. I had this very big challenge. Every time there is a season change, I used to cough. And when I used to cough, it used to go for almost 1.5, 2 months. And एक दिन Farooq pointed this कि, you know, it is not a good idea. So from next year, let's start preparing for it. कि अगर कॉफ आता है और ये किस टाइम पे आता है, what steps are you taking? And for the past couple of years, I don't cough now anymore, because जब भी कुछ होता है तो I'm already prepared with my immunity thing and other stuff, that how to build that immunity so that जब वो होगा, so I'm like well prepared for it and I don't get impacted. So this is how you need to think about your health, you know. So again, I'll not get, I mean, this is all about mental health. So we all know that how we are going on it. So what is the impact of all these things? Now, अगर आप इसके impact को देखोगे, so it creates a significant impact. Now, अगर आप इसके impact देखिए, stress, anxiety, depression, aspiration, activity, mobility, longevity. Now, ये सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं
it creates an impact on our ourselves and indirectly to our family also, you know. सो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कि कभी भी अगर फैमिली में कोई एक व्यक्ति बीमार होता है, सिर्फ वो व्यक्ति के ऊपर उसका असर नहीं होता है, इनफैक्ट द होल फैमिली गेट्स इम्पैक्टेड, बी इट स्ट्रेस, अटेंशन, टाइम, इमोशनल ट्रॉमा, you know. Most of the time I see when the parents come to me and they say that my child is not well, तो मैं बोलता हूँ कि बच्चा तो माँ बाप को अपना रोल मॉडल दिखेगा, तो अगर माँ बाप राइट चॉइसेस नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे राइट चॉइस करेगा? सो समवेयर the culture needs to develop in the family where health is being given the priority. अक्सर आप देखिए हम भगवान के सामने जब जाके पूजा करते हैं, गॉड या आप जिसको भी मानते हो, समवेयर वी से कि गॉड गिव अस अ ग्रेट हेल्थ, यू नो, बट जब वो हेल्थ पे इम्पैक्ट आ जाता है, वो टाइम है जब हम सब कुछ करने को तैयार है, बट नाउ इज द टाइम व्हेन इट नीड्स द फोकस सो दैट वी कैन स्टे हेल्दी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. इकोनॉमिक बर्डन, आई मीन, लाइक समटाइम्स पीपल टेल, यू नो, कि ये सारी चीजें, is it free or is it what cost? And I said, you know, any cost is good because sickness anyway is not cheap, you know, although you might be covered under medical insurance or आप government job में होगे जहाँ पे your medical facility is free, but understand at the end of the day it is your body, and जो भी वो झेलेगा वो आपकी बॉडी झेलेगा, आपकी फैमिली झेलेगा. तो be it a mental trauma or a financial thing, you, I mean, you have to pay a price. So might as well pay a price of a healthy living rather than paying a price to the sickness. So stay ahead of the day every day, you know. So what this program is all about, that कैसे हम जिंदगी भर एक हेल्दी लाइफ ले सकते हैं, what are the right choices to make, you know. Why do you need this program or a program like this? In today's environment there is like too much information everywhere, and I mean Google, there कोई authenticity नहीं है कि जो उसके ऊपर वो जो ओपिनियन डाल रहा है या जो अपना जो चीज दे रहा है वो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, यू नो. बहुत सारे लोग आज की तारीख में सोशल मीडिया पे आके अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही है, बट जब ये प्रोग्राम के साथ आप जुड़ते हो, देर इज अ वेरी वेरी, आई मीन, मोर देन 90 इयर्स का रिसर्च इसके पीछे गया हुआ है. इन ऑलमोस्ट 108 नेशंस टुगेदर, पुट टुगेदर, दैट इज द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, द एग्जैक्ट रिसर्च बेस्ड. एक एक स्लाइड जो आप इसके देख रहे हो यहाँ पे, इसके पीछे की इनफ रिसर्च एविडेंस है इन सारी चीजों के पीछे, व्हाट यू सी इन दिस प्रोग्राम, यू नो. सो what is this program all about? Best of health, best of fitness, need based program. Now what we mean by need based program is आपके जो health buddy or the person who is invited you over here is, they will help you to set up a right health goal for you and your family. Now this is the most important element. मुझे इसके पहले, जैसे फरूक शुरू में मेरे बारे में बता रहे थे, मुझे शुरू में ये लगता था कि अगर मैं बीमार नहीं हूं, इफ आई एम नॉट सिक, व्हाई डू आई नीड ऑल दिस थिंग्स? जब होगा तब की तब देखेंगे. And you know, I mean, but what you'll understand in this program is your health buddy or the person who's invited you over here is, they will help you to understand that how to, what type of health you need to have like 20, 30, 40 years down the line. So this program is based on 6 pillars. This is a 6-pillar program. Number one, what you can expect from this program is diet guidance, you know. Now, diet guidance में आज मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, इसमें आप क्या सीखोगे. एक छोटी सी बात. I am like 48 years of, my age is 48. आज से कुछ साल पहले तक मुझे यही नहीं पता था why one should not eat roti and rice together. Why fruit platter is not good, वो सारे फ्रूट को मिक्स करके, एंड व्हाई ओनली वन फ्रूट शुड बी टेकन एट अ टाइम. बिकॉज मैं जहां भी गया था, बी इट अ पार्टी, बी इट अ रेस्टोरेंट और अ बुफे, आई हैव सीन लाइक रोटी एंड चावल सर्व टुगेदर. मैंने 5 स्टार में जब आप जाते हो तो आप फ्रूट प्लेटर देखते हो, तो मुझे ये नहीं समझ में आया था. तो दिस इज लाइक, आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द हिंट दैट इन द प्रोग्राम, दैट व्हेन यू कम अप, become a part of this program, you will understand the right diet guidance for you. Diet over here does not only mean कि आप भूखे रहो, फास्ट करने का है, but diet means the making the right choices. As Farooq was, अभी थोड़ी देर पहले फारूक बता रहे थे एक्सरसाइज गाइडेंस, वो अभी वो ये बता रहे थे कि अगर आप खड़े को नहीं कर सकते हो तो लाई डाउन एंड देन डू दैट एक्सरसाइज. सो व्हाट इज द राइट सेट ऑफ एक्सरसाइज व्हिच इज राइट फॉर यू? हेल्दी हैबिट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो. आप लोग बहुत लकी हो बिकॉज फ्राइडे को एक प्रोग्राम होने वाला है, ऐसे ही एक सेशन होगा, बट वहां पे पैनल डिस्कशन होने वाला है, और वहां पे जो लोग अचीवर्स हैं आप उनसे सुनोगे दैट व्हाट हेल्दी हैबिट्स दे बिल्ड फॉर देमसेल्फ व्हिच हैज ब्रॉट इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन देम, यू नो. प्रोडक्ट, what type of supplementation is right for you? Now a lot of people ask them कि is supplementation good or bad? डिपेंड करता है कि उसका सोर्स क्या है. अगर से उसकी सोर्स सही है, यू नो,
दुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बात करती है, हम यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंट मैपिंग के बारे में बात करते हैं. इट्स लाइक द नेक्स्ट लेवल ऑफ साइंस ऑल टुगेदर. आई थिंक अगला 10 साल लगेगा सिर्फ ये अवेयरनेस लाने में दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंट मैपिंग. सो लाइफस्टाइल, योर stress and sleep guidance, and community engagement and support. You know, as Farooq rightly said, that it is very difficult जब आप कोई काम isolation में करते हो, because that motivation doesn't stay. But जब आप किसी चीज को community में करते हो, you get inspired to continue doing that, you know. So that is the best part about it. So क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना, ये प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट है? यू नो, थैंक्स टू द मेडिकल साइंस जिसने लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ा दी है. सो यू नो, एवरेज लोग अब 80, 85, 90, 95 तक अब जीने लगे हैं बिकॉज ऑफ द थैंक्स टू द मेडिकल साइंस. बट इज योर हेल्थ स्पैन मैचिंग द लाइफ स्पैन? व्हाट इट मीन्स इज, अगर आप, जब आपकी एज 80 साल की होगी, क्या आप 80 साल में वैसे ही जिंदगी जी रहे होगे जैसे आप एक 20 साल की उम्र में जी रहे थे? Without any medicine, you are able to do all your activity. You don't have to depend on any of the medicine. So this is what we call as lifespan and health span. So जो आप गैप देख रहे हो बीच में, ये गैप है धीरे धीरे. तो अगर आप शुरू में देखेंगे तो there is no gap, like there is no difference between a lifespan or health span. They go hand in hand. But over a period of time, the minute you cross 40, 45, 50, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन के बीच में गैप आ रहा है. That means to maintain that lifespan, you are dependent on medication and other support system ताकि आपकी lifespan चले. Now the whole idea of this program is, क्या, it's like you are like 95 years old and you are absolutely fit, fine, without any medicine. The best part, इस प्रोग्राम में जो भी आपकी हेल्थ बढ़ी है, आई हैव नेवर सीन एनीबडी जो इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है और उसके बाद उसके मेडिकल पैरामीटर्स में कुछ भी चेंजेस आए हैं. आई मीन इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 years दैट आई एम एसोसिएटेड विद दिस होल प्रोग्राम, एंड 15 साल से मैंने एक बार भी नहीं देखा है दैट द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोग्राम, उनके थोड़े भी स्टैटिस्टिक्स में इधर उधर फर्क आए हैं. आई नो फॉर ऑलमोस्ट लाइक नाउ 24 years. Almost I know Farooq for 24 years, and I can vouch for his health, his medical statistics and other parameter. Now that is the best part about thing. ये अपने आप नहीं होता है. You need to be deliberate about this. So these are the foundation of a great health: adequate sleep, adequate hydration, a balanced diet, regular exercises, supplementation and reduced stress. आने वाले सेशन में आप देखेंगे हमें हर एक इस पैरामीटर को इन डेप्थ टच करेंगे, एंड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर क्या पड़ता है. यू नो, इस प्रोग्राम की जो फिलॉसफी है, वो कोर फिलॉसफी इज ऑल अबाउट योर गट हेल्थ. बिकॉज वी we believe, like our scientists believe, कि gut is the most important organ after your brain. So अगर आपका gut healthy है, you know, so आपके सारे lifestyle challenges can be taken care of, और वो reverse हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं. Now जो gut health है, you know, आइडियली जो हमारा गट है, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया होते हैं. आइडियली जो इसकी परसेंटेज है, योर गुड बैक्टीरिया नीड्स टू बी अराउंड 85%, योर बैड बैक्टीरिया नीड्स टू बी अराउंड 15%. बट बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड द चॉइसेस दैट वी मेक, कहीं ना कहीं हमारा जो बैड बैक्टीरिया है ये बढ़ने लगता है और गुड बैक्टीरिया ये कम होने लगता है. एग्जाम्पल लीजिए, आप एक नारियल पानी पी रहे हो. नाउ इट डजंट नीड एनी, लाइक ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप नारियल पानी पी रहे हो तो आपका गुड बैक्टीरिया ऊपर जाएगा या आपका बैड बैक्टीरिया ऊपर जाएगा. द मिनट आप चाय कंज्यूम कर रहे हो, इट इज ऑब्वियस कि जैसे आप चाय पियोगे, योर बैड बैक्टीरिया विल गो अप एंड योर गुड बैक्टीरिया विल कम डाउन. नाउ व्हेन योर बैड बैक्टीरिया गोज अप, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन योर स्किन, योर इम्यूनिटी, योर मूड, स्ट्रेस, स्लीप, योर वेट, digestion, metabolism, energy, cravings, your joint, heart, brain health. आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये सभी में ये आता है. Now people who like say that मेरी craving हो रही है खाने की, it is not about that craving, it is about your gut health. So so this program focuses on keeping a healthy gut. और जब आपका gut healthy होगा तो आप देखेंगे आपके बाकी सारे वाइटल पैरामीटर अपने आप ही अच्छे होने लगेंगे. राइट, नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, लाइक व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप. सो हमने वे डू वी स्टैंड टुडे वो समझा. द फिलोसफी ऑफ दिस प्रोग्राम वी हैव अंडरस्टूड दैट द रोल ऑफ आवर हेल्थ बॉडी. अब समझते हैं कि इसके आगे का स्टेप क्या है. इसके आगे का स्टेप ये है कि जिसने भी आपको इन्वाइट किया उसके साथ सबसे पहले अपना कराड़ा स्कैन करिए. नाउ कराड़ा स्कैन क्या होता है, ये आपके बॉडी के पैरामीटर्स कैलकुलेट करता है. सो वेट हाइट ये एक पैरामीटर है, बट ये एक पूरी पैरामीटर नहीं है. आपका विसरल फैट, आपका सबक्यूटेनियस फैट, ये जो अदर पैरामीटर्स है, दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
Do get in touch with the person who has invited you over here. उसके साथ अपना HRA फॉर्म भरिए. HRA is your health risk assessment form. इससे जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है उसको समझने में मदद मिलेगी कि what is your lifestyle today. And you know, this program is not about making the major changes. This program is about bringing those slight minor changes. Like for a person like me, अगर मुझे इतना ही समझ में आ गया रोटी और चावल को एक साथ नहीं खाना है, and if I just focus on, like, this is a very very vital information for the rest of my life. So when you fill this HRA form, we can understand your lifestyle, your health better, and hence we can guide you better. And then basis on your lifestyle, understand what is the supplementation all about. Because you know, is it about promoting supplements? The answer is no. But अगर फूड में वो गैप है, अगर फूड में जो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए, अगर फूड से वो नहीं मिल रहा है, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि जीन मॉडिफाइड सीड्स क्या होती है, हाइब्रिड, ये जो सारे जो आ रहे हैं, आज आप एप्पल देखिए, आपको जो कलर का चाहिए उस कलर का मिल जाएगा. सो ये जो इतना हमने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है, एज अ कॉन्सिक्वेंस व्हाट हैज हैपेंड इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू हैज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट टुडे. यू नो, ये बोला जाता है कि एवरी 24 आवर्स द विटामिन जो एक होता है वो हाफ हो जाता है जब आप उसको प्लग करते हो. नाउ इमेजिन द फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स दैट वी आर गेटिंग टुडे, द वॉशिंगटन एप्पल्स, दे आर लाइक ऑलमोस्ट 6 months old, kept in cold freeze and all those stuff. So ये जो गैप है, जो भोजन में जो न्यूट्रिएंट होना चाहिए जो हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है, ये जो गैप है, दिस गैप इज व्हाट कॉजेज द न्यूट्रिशनल गैप. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट गैप इज बॉडी अंडर नरिश्ड हो जाती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी वी फॉल सिक विद एनी ऑफ द लाइफस्टाइल challenges. So you need to understand the role and importance of this supplementation. We don't it's like, you know, it's like as important as like breathing, you know. So आप जिसने भी आपको इनवाइट किया उसके कराड़ा स्कैन करवाइए, अपना HRA फॉर्म भरिए, and understand about what is the right supplementation for you. And let's see, this is some of the testimonials that we have of the previous batches, that how people have taken charge of their health through this program and what difference that they've brought in. Like this is a smart young teenage girl. अगर आप इसके चेहरे पे देखिए जो impact है, just by focusing on the gut health, see the transformation that has come onto the skin. Now, it's not only the skin type, you know, what it also brings, the imagine the confidence that it brings in you, the, you know, that confidence that you carry with you. So the emotional health जो इसके साथ ठीक होती है आपकी. So it's not only the skin that is getting better, it is also about your emotional health, it is also about the confidence of the other aspects जो इसके साथ transform होती है. This is our host Veda. No, it was not 2 years, बहुत साल पहले, कुछ साल पहले अगर आप देखिए तो this is how she was. And look at the transformation. और अगर आप right side में देखोगे तो see, जब health पे transformation आता है तो it reflects on your face also. So you know, this program is not only about मोटे को पतला बना दो, skin खराब को ठीक कर दो. It is about creating that exact thing ताकि जब आप 95 years के भी हो, so you want to stay that fit and healthy and everything, you know. I mean, Punjabi, you are very very fortunate because ये सारे पिक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पेशली दीपिका, वेदा एंड मनोज रावत, ये लोग दे आर द पैनलिस्ट फॉर नेक्स्ट वीक. और इमेजिन करिए जब आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी सुनेंगे, एंड आई होप दैट द फोरम इज ओपन वेर यू कैन आस्क देम द क्वेश्चंस. एंड इमेजिन करिए जो इनकी जो लर्निंग थे, यू नो, ये बाय डिफॉल्ट आई एम श्योर ये सबने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में ट्राई की होगी. एंड व्हाट इज इट दैट वन थिंग दैट दे brought that transformation over here. So that's Deepika, Punjabi girl by nature. So she believed that nahi aisa hi hai, theek hai, kya hai. And now, I mean, she's an inspiration to so many other people. So why this is so important? You know, the type जो अभी हम life जी रहे हैं, it is like living long but dying short. You know, so लेकिन जो रियलिटी में जो हम जी रहे हैं, इट इज लाइक लिविंग शॉर्ट बट डाइंग लॉन्गर. सो व्हाट इट मींस इज लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग लॉन्गर मींस कि कहीं ना कहीं आपको मेडिकल डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई है कि आप सिर्फ वो डेथ को आप बस आगे बढ़ा रहे हो, बट वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है. बट द फिलोसफी इज लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट. सो वुड यू रादर लिव 100 years or a healthy and fit 100 years? So the choice is yours. So come join us and look for this session. And आज जो आप देखे, that's just the overview, but the most important session जो होने वाला है वो next week होगा, जहाँ पे आप ये transformation देखोगे, इनकी journey सुनोगे. And if the forum is open, then you can ask the questions to our panelists. So thank you very much, and over to Veda. Thank you so much, Raj, for sharing the program overview and, of course, your experience and perspective.
Yes, in fact, the beauty of this program is that those who have transformed themselves, and of course, it's a journey. It's not that we are completely fit and fine. It's a, a journey, a health based journey. And if you're not yet part of the community, I see a lot of new names, joining us today, obviously being the first session. I would open the floor for questions related to, the whole program. What is the construct? If there are any, Commander Vadera, yes, please go ahead and ask your question. Yeah, good evening. I had a pleasure listening to Raj about the holistic improvement, how to do it. I have a session instead of question. At our age, when we are listening to this, by listening to it on every Monday, Friday, and recording again and again, people like me will get convinced, yes, this is the way ahead. Okay, this is the way ahead. And we will take suitable action. Uh, most of us who are younger to me, 60, they are so used to their particular lifestyle that they find it difficult to carry out the change because of the lifestyle or whatever it is. Okay. And they feel that, theek hai, dekh lenge when the time comes, which may be too late. My suggestion is that maybe you can think of starting a program, counseling the children in the school. Let us say from 8th class onwards, where they understand what is protein, what is all that kind of thing, what is a healthy living, what is organic food, non-organic food. The apple which they are eating is actually 6 months old. So if the children get educated at that age, then I'm sure when they grow up, they will try and implement that the way it is done abroad. Why children are so disciplined, they know the traffic rules because right from the beginning they are taught what is right, what is wrong, how is self-discipline, which I think we are lacking in India as of now. So my suggestion, it can be thought of it, and at a later stage, I think that will at least make the future generation aware of it. Most of us who only get convinced will do it, but at our age, we feel that it's too much. How can I change my lifestyle? How can I leave my evening garam chai, all that kind of thing? Just a thing. So that's just a suggestion, not really a question. Thank you. Sure. Thanks, sir. Yeah, Thanks for your suggestion. Farooq, you want to say anything? No, go ahead. Okay, thanks for the suggestion. And yes, children are our base. We are looking for parents also to guide, and of course, the whole community. In fact, I was smiling when, sir, when you were saying, that we don't have time, because I came exactly with that attitude when Raj and Farooq actually showed me this. I came exactly with this. I was working 11 hours a day in the IT field, working in the weekends. I'm sharing this because, I was lucky. I was lucky to have been introduced to this. I don't know what came over and I listened. It took a long time because my attitude was the chalta hai attitude. And you will listen to more and more of this probably in the next, on Friday, on the coming Friday. We will have panelists who have been, working professionals in the sales profession, in business entrepreneurs who have been, busy all their life. And you will hear more from Farooq as well. I don't see any other questions on the platform. I urge you all, if you're new, first, get in touch with the health buddy or the person who has invited you. Second, urge them to add you onto the WhatsApp community so that you start looking at what's, what are the interactions, etc. And fill up your HRA form so that they can help you. And definitely come back on Friday night. We will see you at 9 p.m. That's it from us. Thank you so much, Raj, and thank you so much, Farooq, for your time. Good night.